Good morning, 9th standard, and today we are going to discuss few more separating techniques. In our previous video, I have discussed about the evaporation, one separating technique, then second is centrifugation, and the third one is your separating funnel. With the help of separating funnel, how we can separate two miscible liquids, immiscible liquids like oil and water. Now, today we are going to discuss about the few more separating techniques, like if there are the two solids get mixed each other. For example, the sodium chloride and ammonium chloride, then which separating technique we can use to separate it, that we are going to learn, and that is a sublimation. तो बेटा हम आज अब करेंगे आपका sublimation करेंगे, and with sublimation we will also study about the distillation and fractional distillation as well as crystallization. Okay, so yes. Chloride. From this mixture of sodium chloride and ammonium chloride. Someone please help me. Ammonium chloride changes direct. Now, in this one method, how we can separate the ammonium chloride and sodium chloride mixture. So first of all, take a ammonium chloride and sodium chloride mixture in a watch glass, or we can say in a china dish. Then we'll start heating it, and if we will see, then they both from this mixture, the your ammonium chloride is actually a sublime substance, and as all of you know that the sublime substances mean which gets directly the substances which gets directly converted into the gaseous one. ठीक है, तो जो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब हम इस ऐसे मिक्सचर को जिसमें कि एक सब्सटेंस सब्लाइम है और दूसरा सब्सटेंस नॉन सब्लाइम है, अगर हमें इन्हें सेपरेट करना हो तो हम उनके लिए क्या करते हैं, we start heating it, we provide a little bit temperature to that. So just have a look here. From the solid to the gaseous state on heating. This is known as sublimation. So, to separate a mixture that contains a salt and a sublimable solid, such as ammonium chloride, you can use the process of sublimation. Take the mixture in a china dish and cover it with an inverted funnel fitted with a cotton plug. Heat the mixture. In a short while, you will see vapors of ammonium chloride. Stop heating and allow the setup to cool. Now, in this one, what we have done, just ऐसे mixture में हमने just ऊपर से क्या करा, inverted funnel रखा, and we start heating it. Once and at the top of the funnel, we just put a cotton plug it so that कि जो fumes निकलेंगी वो भी बाहर ना जा सके बेटा. तो हमने इसको heating start की. जब हमने heat किया तो जो ammonium chloride की fumes थी, that gets collected at the neck of the funnel. उन funnel की neck पे क्या हो गई, सारी की सारी collect हो गई. तो जितना भी आपका ammonium chloride था, that all ammonium chloride get deposited at the neck and at the on the sides of the funnel, whereas the salt left as a residue in the china dish. Means both the substances get separated, and after that we cool this mixture. Means we just let it for cooling for 5 to 10 minutes. 10 minutes तक के लिए आपने छोड़ दिया. After then you just take out the funnel from there and scratch the funnel sides as well as its necks with the help of a glass rod, and collected that ammonium chloride which gets deposited and converted again from fumes to solidify when we cool it. वो ठंडा होने पे दोबारा वापस solid form में आ जाएगा. आप उसको एक अलग china dish में या watch glass में we can collect it by scratching the sides of the funnel with the help of a glass rod, and in the china dish the salt is left. So by this method we are able to separate
the sublime substances from non-sublime solid. Okay. You will see a fine white powdery deposit on the sides of the funnel. Naphthalene and anthracene are examples of solids that sublimate. So these two are That also, was easy. okay. So the we can First, say that camphor और naphthalene भी इसी तरीके के nature को show करते हैं, means both of them are also a sublime substance. So for the separating these camphor, naphthalene also we can use the sublimation method. The another one method is the chromatography, and I will show how the chromatography is used to separate the color components from a dye, या फ्लावर्स में से उसकी डाइज डिफरेंट कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. take a thin, long strip of filter paper. Use a pencil to draw a line on it, about 3 centimeters above the lower edge. Then, put a small drop of black ink on the filter paper in the center of the line, and allow. बेटा ये मेथड आप लोग भी घर पर कर सकते हैं आराम से. You just have to take a filter paper, just cut a long strip of it, ठीक है, in a rectangular strip we can say, and from bottom just take a 3 centimeter, put a line on it, and then take a one drop or pour one drop of a blue ink, or we can say the black ink. Black ink shows the good result, तो आप लोग good result के लिए black ink का use कीजिए, and take a pour a one drop of a black ink on the strip, ठीक है. Then after that you just take a one jar, glass jar. अगर glass jar नहीं है तो आपके घरों में कांच का glass होता है. You just take that glass and with the help of the pencil roll the strip a little bit. बहुत लंबी स्ट्रिप ले लीजिए, थोड़ा सा रोल करके उस पर ऑल पिन अपनी लगा लीजिए, कनेक्ट करिए एज इट इज शोन इन द डायग्राम. दिस इज अ ग्लास जार बेसिकली. ये हमारे ग्लास जार होता है which is available in the lab, and hang it with the help of a cork or in glass jar. Okay. Then after that you will see that fill the glass jar with the water. ठीक है. यहाँ पर basically इन्होंने just 1 minute. Filter paper. But why are there different colored spots on the paper strip? Now pour it in the water, और इस तरीके से करेंगे that the drop of ink should not dipped in the water. When you performed this activity at home, then do it with the water. But when we perform this activity in a school, then instead of water, we can also use acetone. So solvent can be varied, but always we have to take a one precaution that the drop of ink should not dip in the solvent. जो भी solvent आप ले रहे हैं उसमें नहीं dip होनी चाहिए. और फिर जब हमने इसको dip कर दिया है, इसका lower section जो है आपकी filter paper का, वो आपका वाटर या एसीटोन में डिप हो गया है, तो then we will see gradually as the solvent start rising up in the filter paper after absorption. ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वो rise up करने लगेगा. Then we will observe that the different colors of ink that get separated out as it is shown in the figure, like red, yellow, blue, pink, etc. ये कलर्स आ जाएंगे. The ink has water as the solvent, and Now the just dye is soluble in it. As the water rises, it takes the particles of dye along with it. Since a dye is made of two or more colors, the color which is the so simply इसमें principle बेटा यही होता है कि this method, a chromatography, is used to separate a mixture which comprises the solute, जिसके अंदर ऐसे solute हो which dissolve in the same solvent. एक ही solvent में बहुत सारे अगर आपके solute जो हैं, जैसे कि ये different colors हैं, if it gets dissolved in the same solvent, then we can use chromatography to separate such components or such solute. Okay. most soluble rises faster and higher. This is why there are differently colored spots on the paper.
This process of separation is called chromatography. This method gets its name from the Greek word for color, chroma, as it was first used for separating colors. Chromatography is specifically used to separate a mixture that comprises solutes that dissolve in the same solvent. The technique we have just seen of using paper to separate the components of ink is referred to as paper chromatography. Chromatography is used for separating colors in a dye, pigments from natural colors, and drugs from blood, as shown in the diagram. अच्छा ठीक है. So chromatography हमारी कहाँ यूज हुई? Chromatography is basically used to separate the color from the ink. We can say the blood में से different components के लिए उसका यूज किया जाता है, and pigments from the flowers. ठीक है, तो इन सब के लिए हम chromatography का यूज करते हैं. Next one method comes out the distillation, and this method is basically used to separate the miscible liquids. बेटा जब immiscible liquids होते हैं तो separating funnel करते हैं, but distillation is used to separate the miscible liquids. कि हम miscible liquids को कैसे separate कर सकते हैं? For example, alcohol और water है हमारा, so it is a mixture. Alcohol is completely dissolved in water, so how we can separate these two components? So with the help of a distillation, we can distill, or we can separate these two mixtures. For this we have to take, this is known as your now in this, Put the mixture into a distillation flask. this is known as a distillation flask, और जो mixture होगा हम उसमें ले लेंगे, ठीक है, which is further connected to the condenser. आपके कंडेंसर ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें एक इनलेट, एज यू कैन सी हियर इनलेट, और दूसरी तरफ आउटलेट होता है. इस कंडेंसर में अगर आप देखो तो बेटा एक अंदर बिल्कुल नैरो ट्यूब जा रही है, ठीक है. दिस नैरो ट्यूब, इट इज मीन द होल कंडेंसर इज मेड अप ऑफ द ग्लास, and on the another side of the condenser, as you can see here, A distillation flask is a round-bottomed flask with a tube at its neck. This tube is attached to a Liebig condenser. The Liebig this is a Liebig condenser. Its name is Liebig condenser, but basically we called it a condenser, ठीक है, and which is further attached, जिसको कि दूसरे कॉर्नर पे उन्होंने एंड पे क्या किया है, they are using a one funnel, ठीक है. आपका फ्लास्क रखा है आपका, okay. condenser is a long glass tube within a glass jacket with an inlet and outlet for water. ठीक है, ये वाटर The के open लिए end of the flask is fitted with a one-holed rubber cork through which a thermometer is introduced. यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगाया जाता है, और राउंड बॉटम फ्लास्क को हमारे जो है, जिसे हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं, वो किससे क्लोज किया जाता है? आपका कॉक से किया जाता है, और कॉक में there is a one hole from which a thermometer is also poured inside the distillation flask. The thermometer function is to measure the temperature of the flask, कि कितना टेम्परेचर हो रहा है बेटा, क्योंकि दो जो miscible liquids है उन दोनों का, this basically this method is based on the principle that the both the liquids or more than two liquids, the liquids having the different boiling point, ठीक है. तो दोनों लिक्विड जो कि मिसिबल है इन नेचर, देयर बॉइलिंग पॉइंट शुड गेट वेरिड. उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए? एक लार्ज डिफरेंस होना चाहिए. सो ऑब्वियसली once we start heating the mixture, then the liquid which is having a lower boiling point, that is starts converted into the vapors. Once it is start converted into the vapor, it flow, it start enter into the condenser. कंडेंसर में यू स्टार्ट फ्लोइंग द वाटर. तो जब पानी जाएगा तो कंडेंसर की इनर ट्यूब ठंडी होगी. जब से ही वो ठंडी होती जाएगी, सो the vapors again converted into the liquid, and we can collect it into the flask. दूसरे another one side के फ्लास्क में हम उसको क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे. सो जो पहले बॉइल्ड होगा उस वो जो होगा, that we can collect it on the another one side of the condenser, whereas the liquid which is having a higher boiling point, that will remain here in the distillation
फ्लास्क. ठीक है, so this is the basic principle. So the basic principle of this method is कि हमारा क्या होना चाहिए बच्चे, इसके अंदर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट कि हम एक साइड पे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले को कलेक्ट कर दें. फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर है, तो अल्कोहल, जस्ट हैव अ लुक. Heat the mixture. ठीक You है, will see that the acetone, which has a lower boiling point, vaporizes first and then condenses in the condenser. It can be collected from the condenser outlet. Water gets left behind in the flask. This method is used for the separation of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposing and have a large difference between their boiling points. ठीक है बेटा, हमने जैसे पता किया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम एसीटोन और वाटर का, तो एसीटोन जल्दी वेपर बॉयल होगा, तो एसीटोन को पहले कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद वाटर वहीं रह जाएगा, तो वाटर विल बी एसीटोन एंड वाटर दैट गेट सेपरेटेड. लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड्स का बहुत क्लोजर है, इट इज लेस देन 25 Kelvin, then in that one case we are using the fractional distillation method. तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड करते हैं इसके लिए हम यूज. एंड इन दिस वन आल्सो What जस्ट, if the boiling points of both liquids are close to one another? In case the difference in the boiling points of the liquid is less than 25 Kelvin temperature, you can use the fractional distillation method. Let's take an example of two such liquids, N-hexane and N-heptane. As you can see in the diagram, the apparatus is almost the same as used in distillation. The only difference is that a fractioning column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple अब इस वाले में अगर आप देखो तो जैसे फॉर एग्जांपल एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन आर द एल्केन्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज लेस देन 25 केल्विन. सो ऐसे केसेस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं. रेस्ट ऑफ द apparatus as you can see it is same, वही डिस्टिलेशन फ्लास्क है, लेबेक कंडेंसर है आपका, अनदर वन फ्लास्क दे हैव यूजिंग. ठीक है, बट द डिफरेंस इज दिस कि इसके अंदर आप बेटा देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया गया है जिसमें कि ग्लास बीड्स है. ये ग्लास बीड्स जो होती हैं छोटे छोटे लाइक मार्बल्स, इट इज लाइक मार्बल, एंड द ग्लास बीड्स और द मार्बल्स विच इज यूज्ड हियर, उसमें थर्मामीटर लगा दिया, and that fractionating column is again further connected with the distillation flask जिसके अंदर आपका मिक्सचर है जिसे हीट किया जा रहा है हेक्सेन और हेप्टेन को. ये ग्लास बीड्स क्या करती हैं, दिस प्रोवाइड द सरफेस एरिया टू द लिक्विड. सरफेस एरिया इस लिक्विड के लिए बेटा देंगी, जस्ट हैव अ लुक हियर. जैसे ही आपका मिक्सचर बॉयल होना स्टार्ट करेगा, हीट अप होना स्टार्ट करेगा, तो इन द वेपर्स दैट पास थ्रू दीज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो इन ग्लास बीड्स पे जाएंगी. ग्लास बीड्स क्या होंगी, व्हेन दे कोलाइड विद द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, तो दे दैट गेट कंडेंस्ड, आपका मिक्सचर वेपर्स जो होंगी वो कंडेंस्ड होंगी एंड इट गेट्स रिटर्न बैक टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क. वो वापस कहाँ जाएंगी, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाएंगी. सो सरफेस एरिया टाइम ज्यादा मिल गया, अगेन इट गोज अबव. ठीक है, फिर वेपर बनी, फिर कुछ ही वेपर्स जो होंगी ग्लास बीड्स को क्रॉस करके और ऊपर कंडेंसर की तरफ जाएंगी, एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत धीरे धीरे जो होगा, जो बहुत लोअर लिक्विड होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा होगा, दैट विल गोज टू द अनदर वन corner, or that goes to the collect at the another one The side. fractioning column is made up of a tube packed with glass beads. The beads provide the surface for the vapors तो and आपका heptane, which has a higher हेक्सेन का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो फर्स्ट हेक्सेन जो है दैट विल बी कलेक्टेड एंड द अनदर वन साइड ऑफ द फ्लास्क, आपके दूसरे वाले फ्लास्क में आ जाएगा, जबकि एन हेप्टेन जो होगा आपके लिक्विड मिक्सचर वाले ही डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा. सो with this method also we are able to separate two miscible liquids which is having boiling point difference less than 25 Kelvin. Okay.
Next is about the The fractional separation of distillation of mixture. liquid air. Here ये है हमारा सेपरेशन ऑफ एयर का बेटा, कि हम एयर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर इन द फिगर दैट हमने कंप्रेसर लिया, एयर आई liquid यहाँ से, nitrogen boils off first यहाँ से हमने एयर फीड की, ये आपकी कंप्रेसर में आई, कंप्रेसर से ज्यादा प्रेशर मिला इसको, एंड देन इट गोज टू द रेफ्रिजरेशन यूनिट. तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन एयर जो होगी वो कंप्रेस्ड होगी, नीचे रेफ्रिजरेशन एयर यूनिट में आएगी, एंड देन इट गोज टू द लिक्विड एयर. फिर यहाँ से क्योंकि कंडेंस हुई है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो इट गोज डाउन टू दिस बीकर, इस वाले पोर्शन में आएगी, यहाँ ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, and then it goes to the distillation column. to form nitrogen gas as it has the lowest boiling point of minus सबसे पहले नाइट्रोजन गैस आएगी आपका, ठीक है, ये देखिए 196 degrees centigrade. इसका टेम्परेचर This 196 nitrogen gas collects at the top of the fractional distillation column. Liquid argon has a slightly higher boiling point of minus 186 degrees centigrade, so it boils next. It collects as argon gas in the central part of the fractional distillation column. Liquid oxygen has the highest boiling point of minus 183 degrees centigrade. It boils last. It collects as oxygen gas at the base of the fractional distillation column. If you want to obtain only oxygen, सो ये हमारा पूरा प्रोसेस था. सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन, फिर आर्गन, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन आएगी. अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए तो हम ये सेटअप भी दे सकते हैं. इट इज अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. ये बुक के अंदर ही बना हुआ है बेटा. तो ये आपका देखो एयर, यहाँ से आपने एयर स्टार्ट की, ये हमारा कंप्रेसर था जहाँ gas पर from की the air. एयर जहाँ पर की एयर अंडर प्रेशर आई, फिर हॉट एयर से होती हुई ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, ये फ्रीजिंग कंप्रेसर फ्रीजिंग यूनिट आ गई जहाँ पे की एयर को ठंडा किया गया, और यहाँ से वाटर एयर बाहर हो गई, एंड देन आपकी एयर जो अंदर गई कोल्ड कंप्रेस्ड एयर Separate यहाँ out all आई, the other gases. एंड देन यहाँ पर सेपरेटर है लगा दिया गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस बाहर आ गई. लिक्विड एयर जो थी वो आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में गई, जिसमें कि नाइट्रोजन आउट हुई, आर्गन आउट हुई, और आपका यहाँ पर हमने अगर सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन लेनी थी तो लिक्विड ऑक्सीजन हमें यहाँ पर मिल गई. ठीक है. So this is all about our air, fractional distillation of air, from which we can separate out nitrogen, argon and oxygen. Next one method beta हमारा आ जाता है, there is your And collect crystallization, just the oxygen gas. and next Next, evaporate the crystallization. water from the solution. Now crystallization के लिए हम सपोज कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, and then after dissolving it in a very small amount of water, so that it will make a saturated solution. means तब तक वाटर में आप कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे जब तक कि उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता. All of you must know about the saturated solution, in which no more solute can be dissolved in at same amount of solvent. ठीक है, उतने ही वाटर में अब आप और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ऐड नहीं कर सकते हैं. So pure copper sulfate crystals, as you can see here, and add water in it. This process is called crystallization. उसके बाद बेटा उस सोल्यूशन को फिल्टर कर देंगे. फिल्टर करने के बाद उसे रख दीजिए. जब हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है उसके बाद उसे रख देंगे, एंड वी जस्ट कवर्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर, एंड let it cool at room temperature for 5-6 hours, and then after that we will see that the pure copper sulfate crystals we obtained, which we filtered again with the help of the filter paper, और हमें फिल्टर पेपर पे प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. सो दिस मेथड is more preferable instead of evaporation to get the pure crystals that may be of iron sulfate, maybe of copper sulfate, even sugar,
तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि हम शुगर को इवेपोरेट करने की जगह क्रिस्टलाइजेशन से क्यों प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करें, तो ऑब्वियसली जस्ट हैव अ लुक हियर. Sugar solution, for example, the sugar may get charred when you heat it to dryness. ठीक है, अगर हम उसका इवेपोरेशन से करते हैं तो जब शुगर को हम इवेपोरेट करने लगे, बॉयल करने लगे, तो वो चार्ट सोल्यूशन मिलेगा हमें, नीचे शुगर का चार्ट सोल्यूशन मिलेगा और उसमें हमारे को कुछ इम्प्योरिटीज भी मिल जाएंगी. ठीक है, वेयर एज इन द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी गेट ओनली द, क्योंकि हमने सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन शुगर का बनाना है, उसके बाद हमने उसे फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद हमने उसको कवर करके रख देना है एंड सेटिंग के लिए, सेटलिंग के लिए कूल होने देना है क्रिस्टल्स को, और कूल होने के बाद हमने फिर फिल्टर करना है और हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे. लेकिन इसमें हमें चार्ट सॉल्यूशन मिला और जिसमें की इम्प्योरिटीज अभी भी On प्रेजेंट है. evaporating the solution, the solute may still not be pure as it may contain impurities left over from filtration. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज आपके चार्ट सॉल्यूशन में आने सकती हैं. सो द चार्ट शुगर व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम evaporation that can be impure one, but the crystals which we obtain from the crystallization, that will be more pure one. So this crystallization method is preferable to get the pure crystals instead of evaporation method. So beta आज This is हमने why आपका crystallization आज हमने आपका क्या किया है, हमने किया आज आपकी क्लास में सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने स्टडी किया एसीटोन वाटर का एंड एयर का फ्रैक्शनल distillation. In the same one method we can also distill the petroleum, crude petroleum जो होता है हमारा, या crude oil जिसे कहते हैं हम, from which we obtain many byproducts, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, ये सारे के सब, petroleum gas. So all these as also obtained by the fractional distillation of crude oil or petroleum. So ये भी हम कर सकते हैं. So these are the main separating techniques to separate different substances present in a mixtures which is based on their principles. ठीक है ना बेटा? Okay.